ये मुझसे जरा पूछेंगे अटॉर्नी जनरल से, अटॉर्नी जनरल साहब, इट इज सो मच माई सेल्फ, हाँ, मतलब ये अभी जो GIT कौन हेड कर रहे हैं अभी? My lord, it's the additional DG FIA crime going FIA. ये जो आपने अंडरटेकिंग दी है, अगर ये आप इसको इलेक्शन के बाद सेशन रखना शुरू करते तो कोई हर्ष तो नहीं होगा? ये 4-5 दिन की तो बात है, इसमें बीच में छुट्टियां आ जाएंगी, 2-3 दिन वैसी, 5 फरवरी छुट्टी है, फिर इलेक्शन की छुट्टी है, उसके बाद फिर ये 2-3 दिन रह गए ना। जब तक ये अपनी एक पिटीशन भी फाइल कर देंगे, वो चीजें सामने आ जाएंगी ना, सही तरीके से हार्मोनाइज हो जाएंगी कि आप सही हैं, ये सही है, GIT ठीक है, क्या ट्रोलिंग हुई है, क्या गड़बड़ हुई है, वो तो खुद भी उसको सपोर्ट नहीं कर रहे ये लोग जितने खड़े। अगर ऐसा है तो आपकी अंडरटेकिंग इलेक्शन के बाद चले जाएं, कोई हर्ज नहीं है। पॉइंट हमें देखना है, GIT क्या होती है, कानून में इसका है जिक्र नहीं है, ये सारी बातें आप तैयारी करके आइएगा, क्योंकि अभी तो हमें जब केस आएगा आई कैन ओनली थिंक अलाउड कि ये सारी बातें सवाल उठेंगे। 8 को इलेक्शन है, उसके नेक्स्ट वीक में रख लें, 8 के बाद जो है 8 में रात है, जुम्मा हफ्ता है, तो शेर मंगल कोई नेक्स्ट जो है के बाद ही होगा। एहतियात से रिपोर्टिंग इलेक्शन के दौरान ये जो होगा इसका मतलब कुछ और होगा। एहतियात से रिपोर्टिंग करें। You can discuss this with any FIA director or any person who is present in this. The notices are under section 160 of the CRPC. जी 160 का notice है. Notices. And the which provision? 160 of CRPC. These are inquiry stage. Inquiry stage के ऊपर आती है. Inquiry stage notices. And as it is just like a call-up notice. जी call-up notice. And it's not a criminal case. Not yet, sir. Not yet. So it is only, and as I had submitted an undertaking yesterday, and so the inquiry officers are going to strictly follow what was submitted before this court. We are not asking, we are not going to stop you for the inquiry. We only say कि ये जो 5-6 दिन बीच में, इसमें 2-3 दिन वैसी छुट्टियां आ रही हैं, हफ्ते को आपकी भी छुट्टी है, फिर इतवार है, फिर पीर है, 1-2 दिन ही तो 3-4 दिन है वर्किंग इसमें, तो अगर इसको अगर आप 8 के बाद वाले वीक में ले जाते हैं तो कोई चीज रुक नहीं रही। वी आर नॉट गोइंग टू स्टॉप यू, neither they are stopping you to do anything. They only request for some time. In the meanwhile, they will file the petition here. The matter will go to the committee, and the committee will decide. And we will also see the constitution of GIT under the law, whatever their allegations and counter arguments made by you. इसको देख लें, अगर इसमें कोई, मेरा नहीं ख्याल है कि इसको रोकने में कोई बहुत बड़ा हर्ज है, मतलब things will not be. At this stage, if I may say, at this stage, it is only the statements that have to be recorded, nothing beyond that. What statement? So, if there are any, under 160, my lord, if there are any screenshots of any tweets which were on the Twitter which were tweeted, or any. So you are saying no coercive action will be taken? Yes, yes. अच्छा, सर जिन ये तो आपका मसला हल हो गया। नहीं सर, लेकिन जिन जर्नलिस्टों ने इलेक्शंस में ड्यूटियां करनी है, अपनी दूसरी ड्यूटी के, वो FIA की पेशियां भुगतेंगे सर, बजाय इसके कि इलेक्शंस के बाद हो जाएगा वही मसला। सर ये इलेक्शंस के लिए हम अटॉर्नी जनरल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अभी ऑर्डर नहीं कर रहे, इन प्रोसीडिंग्स विद ऑर्डर नहीं हो सकता। लेकिन सर जिस तरह वो इंसिस्ट कर रहे हैं, व्हाई डोंट यू थोड़ा सा इसके अंदर आप इलेक्शंस आज क्या तारीख है, कितने दिन रह गए? 30th, so we are just left with 4-5 दिन रह गए, इसको कर दे आप कह के इलेक्शन के बाद। जरा प्रोफेशन का इशू है कि भाई they are running here, there are so many stories developing, why they are unable to perform. Show some grace for the journalists also. Of course, they have. You should thank him, not us. They have to be professional. We are saying he's there thanking us. We don't thank us. Thank you. ठीक है, अब ये सर आपका थैंक यू यहाँ पर अदा करेंगे, उनका चाय के कप पे करेंगे। हमें शुक्रिया नहीं करें, इनको शुक्रिया करना है तो करें, अगर आप करना चाहें। सर नहीं, इसमें लिख लें, इसमें लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है सर, आप इसमें पार्टी बनना चाहते हैं ना? जी। अच्छा, They'll have to. पिछला ऑर्डर कहाँ गया? वैसे ये जो डिस्कशन हो रहा है ऑन जनरल पॉइंट्स, दिस काइंड ऑफ डिस्कशन शुड बी हेल्ड ऑन एवरी. This is a serious discussion where freedom of expression, truth, you heard speech. You know, every country deals with it differently. I mean, sort of
In Thailand, there's one very severe kind of law, which is their country. That's right. In America, is the First Amendment. Here, we have 7 restrictions in the freedom of expression. In Europe, you can't even say something. Exactly. You know, it's called something denier. So it's a variable thing. And I always stress most towards the truth. I don't know why, but that's my personal thing. It doesn't, the law doesn't really say that. इसमें लिखिए कि कल का ऑर्डर का है हाँ अच्छा शुक्रिया Abdul Qayyum Siddiqui points out that the 4 journalists who, in the order passed yesterday, he had forgot to mention, in yesterday's proceedings, he had forgot to mention the attack on Mr. Absar Alam, who was a journalist, and as such, paragraph 2 of yesterday's order may be read to include his name as well. Full stop, order accordingly. So it extends the report that you have to submit. It will also apply to Mr. Absar Alam. इसमें लिखिए, Mr. Afzal Butt states that he is the president of the Pakistan Federal Union of Journalists and wants to become a party to these proceedings. Full stop. He may move an appropriate application and may also submit suggestions as to how to proceed further with these cases. Full stop. आपका नाम लिख दें प्रेसिडेंट पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट पे आपका नाम प्रेसिडेंट का कैसे लिखते हैं सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट द प्रेसिडेंट ऑफ द प्रेस एसोसिएशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट states that they will be filing a petition with regard to press freedoms and the difficulties being faced. Full stop. Office to immediately number the same and to register it as a constitution petition under Article 184(3) of the Constitution, comma, number it and place it before consideration of the committee, capital C, constituted under the Supreme Court Practice and Procedure, bracket close, Act, comma, 2023. अब हम कह तो नहीं सकते मगर इसी के साथ ही वो कनेक्टेड हो जाएगा